Hello everyone, I am CS Advocate Diya Jariwala, and today I will be dealing with one of the most important topics of your syllabus, that is the Transfer of Property Act 1882. As professionals from any field, may that be chartered accountants, company secretaries, advocates, it is very important that we understand this particular act in depth and conceptually clear because our profession depends on it. When we'll become professionals, it is on this very aspect that your clients will come to seek guidance from you about what kind of property they should buy or invest in, what kind of transaction should they enter into, what should be the mode, what will be the impact, and what will be the formalities concerned with this particular transaction. It is very important that transactions related to property happen according to law. And as professionals in this field, it is our primary responsibility to ensure that that all such transactions take place in compliance with the relevant provisions. Our profession, our bread and butter depends on this statute. Therefore, it is very important not only from a exam perspective but also from a practical point of view. We need to understand the practicality of this particular legislation, and in addition to that, at least 5 to 10 marks of your examination question paper will be covered by this topic. Therefore, we should understand this topic in depth and with clarity. Before we begin with this particular enactment, let me tell you that in part 1 of this video, that is this video, I will cover an introduction to the Transfer of Property Act by clearing all your doubts and miscommunications regarding the various definitions, the various concepts, and the formalities involved in a transfer. In this video, we will deal with the definitions of important terms, the difference between movable and immovable property, and the transferability of various properties. Along with that, in brief, I will also cover the formalities that are involved in the transfer of property. So, let's begin our lecture for today. When we study any act, it is first and foremost most important that we understand the object, the nature, and the scheme of that act. So, what is the nature of this act? It is a general law relating to transfer of property. Now, what is the scheme? It is regarding immovable property. It contains provisions regarding the transfer of immovable property. And thirdly, it is the object of the act. Now, it is a very good practice कि when you write an answer regarding any act, any statute, कुछ भी question हो, whether it may be relating to something very technical, whether it may be regarding to some case study, anything, it is important, it is a good practice that you write the objective of that act. And what is the objective of this act? It is to amend the law relating to transfer of property by act of parties. By act of parties is the key word here. In this, you are covering two things. One, it is between parties, so it has to be between living persons, because dead people cannot act, right? So it is act of parties, so between living persons. Secondly, अगर living persons के बीच में है, so it cannot be testamentary. What is testamentary? It is with regard to a will, so it is non-testamentary. And thirdly, it does not cover transfers by operation of law. It does not cover that because it covers act of parties only. So again, succession, insolvency, execution. Execution मतलब will का execution, we discussed it earlier. तो ये सब इसमें cover नहीं होगा because इसमें दो act parties के नहीं है. It is only between because of operation of law, that is transmission. Again, ये तीन चीजें इसमें cover हो जाएगी.
So by act of parties, these are the different types of transfers, and we are going to study each one of them in depth, in detail, when we study them independently. We all know what is sale, lease, mortgage, gift, exchange. Only actionable claim is the term, जो थोड़ा सा difficult है. So we'll learn that also in the course. ठीक है? Let's move on to the next slide. Now that we have seen what is transfer, it is important that we look into the definition, the meaning of property. We all know that there are two kinds of property, movable property and immovable property. Under movable property, it is the definition of movable property is not covered in Transfer of Property Act. It is not present over there. So, we will go whenever a definition of a certain term in a statute is not present in the statute itself or that act, we go to the General Clauses Act, we go to the Registration Act, and the definition of movable property can be interpreted with the help of these two acts, that is the General Clauses Act and the Registration Act 1906. Okay. So let us look at the definition of movable property. Movable property means property of every description. That is, it is a very inclusive definition. It includes all kinds of properties. Movable property means property of every description except immovable property. So now we will have to look at the definition of what is immovable property, right? And including standing timber, growing crops and grass. What do you mean by including standing timber? Means these three things are movable property. Why they are movable property? We will look into that when we study the definition of immovable property. Okay. Let's move forward to the definition of immovable property. Remember these three, okay? Standing timber, growing crops, and grass. These three are movable. And from how or why they are movable, we will learn now, because movable things are those which can be transported from one place to another. You will say, how can trees be transported from one place to another? Standing timber. Timber means wood. Timber means teak, bamboo, shisham, mahogany, all these trees which give us wood, which are uprooted. They are cut from the bark itself. The purpose of those trees is to give us the wood. Then crops. When we sow seeds, we harvest those crops. हम लोग उन्हें पूरी तरह निकालते हैं, like wheat, corn, rice, etc. These crops, you remove them. So is grass, right? So these three have been held to be movable property because they are removed, they are uprooted. What about other trees? For example, mango tree, apple tree. They stay there for years together, for 20 years, for 30 years. And what do? We only take the fruits of those trees. We only take the mangoes, we only take the apples, right? So those trees come under immovable property. But these three kinds of plants, only and only these three kinds of plants come under movable property. Why is it important that we understand the difference between movable and immovable? Because there are different laws governing different property. For immovable property, Transfer of Property Act is applicable, right? We are studying that. But for movable property, Sale of Goods Act is applicable. All right. So this is why it is very important whenever some client comes to you with a transaction, the first and foremost thing that you will do is you will identify the kind of property. Based on that, your compliances, your formalities, the legal requirements will change. Let's move forward now to see what is immovable property. So section 3 of the Transfer of Property Act defines immovable property.
It gives you, it states that immovable property does not include standing timber, growing crops, and grass. Remember, I told you we got this from the definition of immovable. So if you look at this definition, it only gives you a negative definition. It tells you what is not immovable property, but it does not tell you the meaning of immovable property. Again, we go to what? We go to the General Clauses Act. We go to the Registration Act, and there we get the definition of immovable property. So on a combined reading of these three definitions, that is the General Clauses Act, the Registration Act, and the Transfer of Property Act, we will get the definition of immovable property. So an immovable property means land, right? Obviously, whenever you look at land, can land be moved? No, that is the first and foremost example. Agricultural land, any kind of land, barren land, farmland, plots, ponds, and land includes what? Land also includes water bodies like well, ponds, tanks, not those movable tanks. Okay, tanks means what do you call it? Bada sa, it's like a small indoor lake. That's a tank. Benefits arising out of these lands. So you need to remember, any property, movable or immovable, is either tangible or intangible. Tangible means that which we can see, smell, touch, feel, etc. Right? Intangible means they only exist virtually, like a WhatsApp message. It only exists on your phone. Can you feel it? No. You can see it, you can read it, but it exists over a network. It can be erased easily. That's intangible for you. Like IPRs, intellectual property rights. Okay, both movable and immovable properties are tangible and intangible, right? So benefits that arise out of land, what is those benefits? For example, a right, these are rights. What kind of rights? So my land gives me a right to rent, right? I can lease it out to someone and I can take the rent. I can, if I have a well, I can give someone the right to take water. Okay, so I'll just briefly tell you movable and immovable, right? Movable and immovable. Water is movable. The right to water is immovable, right? Okay, fishes, movable. The right to those fishing is immovable. Money or rent is movable, but the right to rent is immovable. All right. So these are some of the distinctions. Oil, extracting oil. Many people have oil fields, have diamond fields, gold mines. So gold, diamond, oil, all these are movable stuff. They are movable things, movable property. But the right to extract oil, the right to mine the gold, the right to mine or extract those diamonds are all immovable property rights. So this is there. Then this is the second part. So the first part is immovable property means land, benefits that arise out of that land. Okay. And thirdly, things attached to earth. Attached to earth in itself is a wide definition. Look at that house. So there was only a land. Then you made walls, you made a building, you made a structure, you made pillars. What are these things? They are attached to earth. Why are they attached? So you can use them. So they are attached. Look at trees, shrubs, they are rooted in earth. They have their roots.
So again, only three trees and plants are excluded. Timber, crops and grass. Apart from that, all other plants, trees, they are attached to earth. So what are they? They are immovable. They are rooted in earth. Then walls, buildings, again, we embed them in the earth. We attach them in the earth. We place those structures deep inside the earth. So they are attached. And thirdly, there is attached to what is embedded for the permanent beneficial enjoyment. Attached to what is embedded. So these buildings are embedded, the walls are embedded, but these windows are attached to those walls. The door, the chimney, the balcony, the rack. Okay, so all this is attached to those buildings for a permanent enjoyment. Permanent. So take the example of a ceiling fan. A ceiling fan is immovable, but a table fan is movable, and this is immovable. Why? Because a ceiling fan is permanently attached to your ceiling. It is there for your permanent enjoyment. But a table fan, maybe today you'll keep it near your bed, near the bedroom. Then maybe in half an hour you want to sit in the living room. So you take it out, you go in the living room, you again plug it in over there. So that's movable for you. So this is the third example. And lastly, things permanently fastened to earth. Again, this is the same as embedded in earth. It is like a machine, plant and machinery. Huge machineries like furnace. Example is furnace. Okay, they are यहाँ पे जो assembly line, the assembly line जिस पे parts assemble होते हैं, furnaces, they are all attached or permanently fastened to earth. You cannot move them easily. So they are what? They are immovable property. So I hope you all. So there are four things. First is land. Benefits that arise out of land. What are these benefits? These are the different rights that accompany that land. Then things attached to earth and things permanently fastened to earth. What is attached? One is rooted in earth. Second is embedded in earth and attached to what is embedded for permanent beneficial enjoyment. जैसे अगर तुम्हें घर एंजॉय करना है तो विदाउट विंडोज विदाउट डोर्स कैन यू एंजॉय व्हाट इज अटैच्ड house is attached to earth. If there are no windows, no fans, no furniture, nothing, how will you enjoy that house? You won't be able to, right? So such things which add to that enjoyment and which are permanently kept there, so they are called as immovable property. Let's move on to the next slide. Let's do a quick recap of what is movable, what is immovable. If you note down these examples, you will never have to, revise this topic again, because these are some simple distinctions: goods, vehicles, printer, apples. IPR, why is it movable? It's not immovable. Why? It doesn't. देखो, मूवेबल क्या है? जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है. तो पहले जब भी तुम कोई चीज को देखोगे, यू विल सी वेदर इट इज इमूवेबल. अगर वो इमूवेबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली मूवेबल बन जाएगा. Right, this is the test that you will apply. First you will see if it is immovable. If it doesn't, because movable की definition ही नहीं है. Movable की definition है कि जो immovable नहीं है वो movable है. But immovable के अच्छे से उन्होंने definition दी है कि land immovable है, जो land से attached है वो immovable है, जो land के अंदर permanently fastened है in artificial sense, that is there. जो वो जो चीजें हैं उनको एंजॉयमेंट परमानेंट बने. तो ऑल दीज पैरामीटर्स आर गिवन. तो आईपीआर फिट होता है क्या वो डेफिनेशन में? इज इट लैंड? नो. इज इट अटैच्ड टू लैंड? नो. इज इट परमानेंटली फास्टेंड टू लैंड? नो. इज इट एनी बेनिफिट दैट अराइजेस आउट ऑफ लैंड? नो. So is it immovable property? No. So what will it be? It will be movable property. That's how you look at it. Now you will say all rights. ठीक है, we saw right to fishery, right to extraction of oil,
right to mine the gold, all these rights are immovable property. But why is right to worship movable property? Now, those only those rights which accompany a land or immovable property, मतलब उसके साथ साथ कोई immovable property होना चाहिए. मतलब right to rent is immovable, but right to a royalty is not immovable. Right to rent is immovable, है ना. बट राइट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी म्यूजिक पे आएगा. ठीक है, म्यूजिक मूवेबल अगर है तो उसके साथ वाली रॉयल्टी भी तो मूवेबल होगी, उसका राइट भी तो मूवेबल होगा. तो जो राइट एग्जिस्ट करता है दैट शुड अकम्पनी, बोथ शुड एग्जिस्ट टुगेदर. ठीक है. सिमिलरली फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट डेफिनेटली मूवेबल, पेंशन, पीएफ, अलाउंसेस सब मूवेबल, एंड अ डिक्री फॉर अरियर्स ऑफ रेंट. तो अभी तो मैंने बोला कि राइट टू रिसीव रेंट इमूवेबल है, तो डिक्री फॉर अरियर्स ऑफ रेंट कैसे मूवेबल हो गया? बिकॉज वो डिक्री पास हो चुकी है. ठीक है. डिक्री मीन्स कोर्ट ऑर्डर, इट्स नो राइट, it's already given, so it's in the form of a paper. A court order, a paper, will always be movable. A decree is a court order, right? It has crystallized. Amount पता है 2 लाख रुपए, ठीक है, movable हो जाएगा. It's like a FD receipt, it's like a pension. ठीक है. So I think this makes your difference between movable and immovable property sufficiently clear. Let us now go to the quick recap on the Transfer of Property Act. So Transfer of Property Act, we saw कि कैसे transfer ये एक शब्द से by act of parties से हमें समझा कि it is between living persons, because living person ही तो act कर सकेंगे, right? It is non-testamentary because testamentary, so will से cover होगा, तो will, succession वगैरह तो specific दूसरे laws हैं. Secondly, it is general law. ठीक है, because देखो तुम succession law overrides transfer of property act, stamp duty act overrides transfer of property act, companies act overrides transfer of property act. Similarly, like that. Immovable property, because movable कहाँ govern होगा? Sale of goods act. Immovable कहाँ होगा? Transfer of property act. That's it, right? Now let's move on to our next slide. This is a new thing. So when we talk about all these rights, right to receive rent, right to lease it out, right to enjoy the property, right to alienate, all these rights become bundle of rights, right? इसमें है right to possession, right to receive rent. Then there is right to enjoy, right to alter, right to sell, alienate मतलब sell, right to mortgage, and so on etc. तो ये सारे राइट्स जो है ये बनता है अ बंडल ऑफ राइट्स. ठीक है. देयर आर एक लैंड अगर तुम उसके अंदर है देखोगे, देयर आर सो मेनी राइट्स टू डू सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज. अगर किसी के पास ये सारे राइट्स है, दैट इज उसके पास उस चीज का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है. दैट पर्सन हैज एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, उसके पास सब राइट्स है. एब्सोल्यूट means there is nothing left, he has every right, everything he can do about that property. So what is absolute interest? Absolute interest is nothing but ownership. So
right to possession, right to enjoyment, right to alienation, right to rent, right to lease, right to mortgage, right to do anything, right to even destroy. मेरा प्रॉपर्टी है मैं तोड़ दूंगी, ठीक है. So that is absolute interest. और absolute से अगर कुछ भी कम है ना, अगर absolute में एक राइट भी कम है, अगर तुम्हारे पास उसमें possession है, पैसा लेने रेंट लेने का राइट है, सब है, but you don't have the right to alienate it, then that will be a reversion. जो रिवर्जन मीन्स रिमाइंडर, बचा हुआ. तो ओनरशिप के अलावा जो भी राइट होता है, जैसे अगर मैं ओनर हूं, मैंने वो प्रॉपर्टी रेंट दिया, रेंट पे दिया, लीज आउट किया, तो टेनेंट के पास भी कुछ राइट्स आ जाएंगे. टेनेंट हैज बीन पेइंग रेंट, सो ही गेट्स टू लिव इन दैट प्रॉपर्टी, ही हैज टू मेंटेन दैट प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दैट, राइट. तो उसका राइट बनेगा रिवर्जन, रिमाइंडर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम ट्रांसफर के टाइप्स देखेंगे, जैसे सेल, मॉर्टगेज, मॉर्टगेज के ही कितने सारे टाइप्स है, ट्रांसफर के टाइप्स है सेल, लीज, मॉर्टगेज, गिफ्ट, एक्सचेंज, एटसेट्रा. तो उसमें मॉर्टगेज के ही कितने टाइप्स है. मॉर्टगेज में होता है सिंपल मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, फ्यूजाइन मॉर्टगेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो सब के वक्त हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी प्रॉपर्टी में एक इंसान का इंटरेस्ट कितना है. whether what he did, he acted. For example, मैंने एक प्रॉपर्टी बेच दी, did I have a right to sell it? Was I only a tenant? Was I only in possession of it? Was I only a person living there, a habitant, a resident? No, you should have some right. Co-parsoner है कैसे? So this is very important to understand. ये absolute interest reversion वाला concept, it will be helpful to you in jurisprudence. It will be helpful to you in other acts like succession act. जब आप succession determine करोगे, तब भी ये बहुत काम आएगा. So this is extremely important. Second part is vested and contingent interest. Vested interest मतलब अगर आज मुझे किसी ने एक अग्रीमेंट साइन करके बोला कि रिया आफ्टर 5 years you will get possession of this land. I have given him some money and he has told me कि 5 साल बाद you will get possession of this land. So that is my vested interest. वो definitely मुझे 5 साल बाद होने वाला है. Example is agreement to sell. मतलब ट्रांसफर तो अभी नहीं हुआ, मुझे पोजेशन आज मिला क्या, नहीं, लेकिन मैंने एक अग्रीमेंट बना लिया कि 5 साल बाद मुझे बेच देना, मैं आज आपको थोड़ा सा पैसा देता हूँ, ठीक है. तो दैट इज वेस्टेड इंटरेस्ट. और जब किसी ने बोला रिया अगर तुमने फ्यूचर में ऐसा किया, अगर रिया यू टॉप इन योर 12th बोर्ड एग्जाम्स, आई विल गिव यू this as a gift. That is contingent. Will I top, will I not top? The event is uncertain. कॉन्टिजेंसी पे बेस्ड है. अगर कभी तुम्हारे घर पे कोई कंटिजेंसी हुई तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, इस कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट. तो वेस्टेड इंटरेस्ट तुम में आज आ गया, वो इंटरेस्ट तुम्हें, प्रॉपर्टी आज नहीं मिली, ट्रांसफर आज नहीं हुआ, लेकिन वो इंटरेस्ट मिल गया. मतलब तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाला है, इसकी सर्टेनिटी है, उसकी श्योरिटी है, और यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ठीक है. सो that is how this works. So vested interest, contingent interest समझ गया, absolute reversion सब. Now let us understand कि ट्रांसफर के दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना. तो एक होता है पार्टीज टू अ ट्रांसफर. वी सॉ कि ट्रांसफर जो एक्ट ऑफ पार्टी से होता है वही तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर्ड है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक्ट ऑफ पार्टी से होने वाला ट्रांसफर. सी द जंबल द लेजिस्लेशन का नाम ही तुम देखो, व्हेन एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर, these 4 words are important. तो एक ट्रांसफर के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, एक होगा पार्टीज और दूसरा होगा उसका सब्जेक्ट मैटर. प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना ट्रांसफर करने के लिए, तो एक है ट्रांसफर, उसकी पार्टीज और प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी कौन सी टाइप, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी. कैन एनी प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर, यस, एनी प्रॉपर्टी भी कैन बी ट्रांसफर्ड, ओनली एंड ओनली इफ इट इज नॉट एक्सक्लूडेड बाय एनी लॉ. अगर लॉ में बोल दिया कि नो सर ये आप नहीं बेच सकते हो, ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, इस पे ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है हमने,
तो हम नहीं जा पाएंगे। जैसे हम लोग को कहीं जाना है, कैन वी ट्रैवल एनीवेयर? यस वी कैन ट्रैवल एनीवेयर। कैन वी वॉक एनीवेयर? यस वी कैन। अनलेस वहां बैरिकेडिंग हो गई, अनलेस वो एरिया को कर्फ्यू कर दिया, अनलेस वहां लॉ में बोल दिया कि यहाँ जाना मना है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये तुम नहीं एंटर कर सकते आफ्टर 6 o'clock, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट इज द सेम थिंग ओवर हियर। नाउ एक्ट में, लॉ में कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला है? एक है फ्यूचर प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि फ्यूचर ट्रांसफर आज तुम अग्रीमेंट नहीं बना सकते हो। यू कैन मेक एन अग्रीमेंट टुडे ऑल्सो ऑफ अ प्रॉपर्टी विच एग्जिस्ट राइट नाउ। बट कैन आई से मैं 2 साल बाद ना 10,000 चॉकलेट्स प्रोड्यूस करूंगा, और वो जब प्रोड्यूस करूंगा तो उसको तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, और उसका ट्रांसफर मैं आज कर रही हूँ। वो चॉकलेट्स कभी बनी ही नहीं है, they have never been made. So what kind of property is that? That is a future property. It is not in existence only today. So how can you transfer it? जो आज है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। सिमिलरली प्रॉपर्टी विच इज एक्सक्लूडेड बाय हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या है? को पार्सनरी प्रॉपर्टी इज एन एग्जाम्पल। तो लॉ में ना कोई कोई रेस्ट्रिक्शन दे दिए है कि यार तुम ना, भले ही वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है पर तुम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो फॉर सो एंड सो रीजन। ऐसा लॉ में बोला है, तो अब लॉ में बोला है तो वी हैव टू लिसन, वी हैव टू फॉलो। एंड लास्टली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 में कोई कोई प्रॉपर्टीज दी गई है जो तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। Fine, we will learn this also today only. Now let us go to the first ingredient again. We saw कि 2 parties चाहिए होती है, at least minimum 2 parties. एक होता है transferor, एक होता है transfer. Can anyone be a transferor and can I today sell Taj Mahal? No. Why not? I'm not the owner of the property. Can I make an agreement saying that, oh, I will sell you Taj Mahal, I will rent out Taj Mahal, I will lease? I can't. It's not mine. So there are 2 conditions. One is ट्रांसफर तो पहली चीज करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कोई कंडीशंस है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यू शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कैन एनी पर्सन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, देयर शुड बी, दैट पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ दिया है? सेक्शन 10 of the Indian Contract Act gives you these 3 qualifications. And secondly, you should be authorized or entitled to transfer. For example, most of you will be staying in hostels, PGs, etc. for completing your studies, right? कल आप जाके वहां हॉस्टल में रह रहे हो, ओनर ने क्या दिया है आपको? आपसे पैसा लिया है, आपको हॉस्टल में रहने का राइट दिया है। Can you go and make a deal of a transfer about that hostel? तुम जाके कल वो हॉस्टल को बेच सकते हो क्या? नहीं. Do you have a right to sell? No. You only have a right to live there. You don't have the right to sell it. Who can sell it? The owner can sell it. Or any person who is authorized to sell it can sell it. Right? So, you need to follow 2 conditions for becoming a transferor. एक होता है competent to compact. जब भी ये शब्द लिखोगे ना, you have to elaborate. क्या क्या होगा? 3 चीजें: majority of age, soundness of mind, and not disqualified by any law. कौन होते हैं disqualified by law? Insolvents, alien enemies. Alien enemies are कि कोई कंट्री के साथ अभी इंडिया की वॉर शुरू हो गई तो उसके सिटीजन्स बिकम योर एलियन एनिमी। एंड ट्रांसफर, तो ट्रांसफर कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ बैठे बैठे एक अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पे भी, बट ही शुड बी कंसीव्ड, ओके, आई कैन, और समथिंग, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, so I can today sit and make a transfer in the name of कि for example Mr. X and Y के child के नाम पे मैं बनाऊँ, even if that Mr. X and Y's child has not come on to being today. So any person, including a minor, can be your transferee. Formalities of a transfer. This is the part where people will come to you for advice.
they will come to you to seek your guidance for this कि क्या क्या formality है. So before you begin with understanding क्या formality करना है, you have to first determine, you have to first decide property कौन सी है, movable है या immovable है, and based on that you will decide the mode of transfer. तो मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना बहुत आसान है. आज मेरे पास एक गोल्ड चेन है, आई वॉन्ट टू गिव इट टू माई फ्रेंड, आई रिमूव इट फ्रॉम माई नेक, आई गिव इट की ये ले लो, ये तुम्हारी हाथ से, तो हो गई ट्रांसफर, उसके पास चली गई. ठीक है, मेरे उस मुझे गिरवी रखना है, मैंने जाके वो जमा कर दी बैंक में कि सर मेरे को 20,000 रुपए दो, आई वॉन्ट अ लोन, यू कीप माई गोल्ड चेन, यू कीप माई वॉच एक्सेट्रा. So that's how movable property. And similarly, movable properties के केस में you can also make an instrument in writing. दोनों हो सकता है. Instrument तो तुम हर चीज का agreement बना ही सकते हो, right? तो movable के केस में delivery possible है, तो delivery भी दे सकते हो और instrument भी बना सकते हो. बट immovable property आप जाके ऐसे बोल सकते हो, आज से ये मेरे घर की चाबी तुम्हारी, बस हो गया. नो यू कांट. लैंड रिकॉर्ड होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, टैक्सेस होते हैं, सो मेनी फॉर्मेलिटीज, राइट? तो ऐसे ही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते. You need to make a proper instrument, you need to make a proper agreement. And what are the conditions in that agreement? There should be attestation. Attestation means at least two witnesses should sign. अब हर ट्रांसफर की केस में अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर ट्रांसफर में होता है. जैसे सेल और आई थिंक सेल एंड लीज डज नॉट रिक्वायर अटेस्टेशन, मॉर्टगेज एंड गिफ्ट रिक्वायर अटेस्टेशन, बट स्टिल इवन इन सेल यू विल सी सेल डीड के पीछे दो विटनेसेस की साइन रखते हैं, रजिस्ट्रेशन में करा ही लेते हैं. रजिस्ट्रेशन मीन्स यू गो टू योर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यू गो देयर, यू टेल देम कि मेरे को मेरा सो एंड सो अभी घर इसके नाम पर करना है. ठीक है, एंड यू गिव अ नोटिस. नोटिस इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड एक्चुअल नोटिस, दो तरह, टू टाइप्स ऑफ नोटिस. सो एक्चुअल नोटिस तो इजी है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो, बन जाएगी एक्चुअल नोटिस. बट व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? Two things again: willful absentation and gross negligence. These are the types of constructive notice. Constructive means implied. You know, na? Either an agreement can be implied agreement or express agreement. Express agreement when you write it in words. Implied means by action. So, willful absentation. For example, I write a registered letter and I send it to a person saying that मैंने मेरा घर अभी मिस्टर एक्स को बेच दिया है. अभी that person to whom I sent the letter says courier वाले से कि मैं तो लूंगा ही नहीं डिलीवरी लेटर का. He hasn't opened it. He has refused to take the envelope only. He knows that this is what is, so it will be presumed that he has been given a deemed notice. Secondly, अगर किसी चीज का registration हो चुका है, that is also a deemed notice because a registered document is in public domain. क्रॉस नेग्लिजेंस मतलब मैंने अगर बोल दिया कि मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं हूँ, तो अगर आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया वो मेरे एरिया में आता ही नहीं है, तो दैट इज नॉट इनफ नोटिस. इट्स नॉट राइट. इट इज नेग्लिजेंस ऑन माय पार्ट. इफ आई एम बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड दैट पर्सन इज पब्लिश्ड, इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जाके पता करूँ. इट इज माय diligence which will be appreciated. I can't say that oh sorry मेरे से नहीं हुआ, मेरे को टाइम नहीं था, मैं ऑफिस में था, मैं आउट ऑफ इंडिया था. नॉट पॉसिबल. अब क्या तुम्हारे लिए ही पब्लिश, यू आर लिविंग इन यूएस अभी, ही विल कम एंड पब्लिश इट इन यूएस? नो, ही विल पब्लिश इट इन इंडिया ओनली. प्रॉपर्टी इज इन इंडिया, लाइक दैट. Lastly, he had seen which kind of properties can be transferred. So those unless expressly excluded by law. So section 66 of the Transfer of Property Act says which properties cannot be transferred, right? So you remember all these points. First is spes successionist. Spes successionist means the possibility, the chance of a person
to succeed to an estate, to get a legacy from his relative, etc. And these kind of proper possibilities. So I'll tell you an example. For example, Mr. X, he's alive, okay? He has certain property, own property. Now, he has son A, B, C, son and wife, daughter भी है एक, भाई है एक. So these many people are there. अब A बोल रहा है मैं ना मिस्टर एक्स का फेवरेट हूँ, तो प्रॉपर्टी तो सारी मुझे ही मिलेगी. नाउ ही इज टेलिंग सम थर्ड पर्सन, समझो डी को बोल रहा है वो, कि आज मिस्टर एक्स इज अलाइव, ठीक है. ही इज सेइंग दैट दिस इज माइन, आई विल सेल इट टू यू नाउ. अब है ये किसकी, मिस्टर एक्स की है, पर ए डी को बोल रहा है कि मैं आज तुमसे अग्रीमेंट कर रहा हूँ सेल करने का, आई एम मिस्टर एक्सेस फेवरेट सन, प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी तब तुम ले लेना. इज दैट राइट? नो. इट इज पॉसिबल ना कि शायद वाई को मिले, शायद बी को मिले, सी को मिले, वाइफ को मिले, या शायद सबको इक्वली मिले. पॉसिबल, राइट? So can he send this chance? It's like a lottery कि मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, तो तुम मेरा टिकट मुझसे लॉटरी के पैसे में खरीद लो, मैं वो तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ, और अगर तुम्हें लॉटरी मिली तो तुम ले लेना. So these kind of possibilities are not allowed to be transferred. ऐसे तो फिर दुनिया कहाँ पहुंच जाएगी, कोई कुछ भी बोलता रहेगा, ट्रांसफर करता रहेगा. एंड what, how does one determine कि whether you will get it or not? Right? So this is something which cannot be transferred. These kind of chances, chance means it is a possibility, shayad wala part, ठीक है. Second, a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. This means what? Mr. A, he has given his house on rent to Mr. B and he has given it for living. ठीक है, उन्होंने दिया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए. मतलब आज अग्रीमेंट बनाया रेंट का, कंडीशन सब्सिक्वेंट मींस एग्रीमेंट बनाने के बाद सब्सिक्वेंटली he will live it and use it as a residential property. Now Mr. B starts a hotel over here. A is very angry. A has a, अभी हर रेंट अग्रीमेंट में यू विल सी देयर इज अ राइट ऑफ री एंट्री, कि भले मैं तुमको रेंट पे लीज पे दे रहा हूँ, रेंट मींस लीज, तो भले ही मैं तुमको आज रेंट पे लीज पे दे रहा हूँ, तो आई विल कीप अ की, अ सेट ऑफ कीज विथ माई सेल्फ, एंड आई विल एंटर द हाउस टू इंस्पेक्ट, टू चेक. ठीक है. नाउ मिस्टर ए transfers this right to Mr. X. Is it possible? Is it valid? No. Only and only Mr. A can come and leave and inspect or enter this house when it is on lease. Why was this done? It was done so that the privacy, the security, वरना तो कोई किसी को भी ट्रांसफर करता रहेगा अपना राइट. Anybody will keep entering. रेंट पे लेने का फायदा ही क्या है? Continuously people keep visiting my house. So only the person authorized can come. Who is that person? It is the owner. So and this right cannot be transferred. An easement cannot be transferred apart from a dominant heritage. So a dominant heritage matlab, so an easement means a right of way and a right of enjoyment, etc, etc. समझो मुझे यहाँ जाना है, यहाँ दो लाइन से प्लॉट्स है, दिस इज माय प्लॉट एंड दिस इज मिस्टर बीस प्लॉट. तो मुझे अगर यहाँ जाना है ऑन द टू द सिटी, आई हैव टू पास थ्रू मिस्टर बीस प्लॉट. जगह ही नहीं है, दूसरा रास्ता ही नहीं है. तो आई हैव, एज व्हेन आई बॉट दिस प्लॉट, मुझे ना मेरे साथ ये राइट मिला कि मैं बी से जब ये घर खरीदा मैंने या प्लॉट खरीदा, ही टोल्ड मी दैट आप मेरे बिल्डिंग में से, मेरे प्लॉट पे से
रोड यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ मिस्टर ए ने क्या किया, एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर ए ने प्लॉट खुद ही रखा और मिस्टर एक्स को बोला कि ये रोड आप भी तो यूज करो, मैं आपको मेरा राइट भेज देता हूँ। इज इट पॉसिबल? नो। रोड का राइट किसको मिला था? मिस्टर ए को। जिसको राइट मिलता है दैट पर्सन इज द डोमिनेंट हेरिटेज हियर। जिसको देना होता है वो राइट, ही बिकम्स सर्वियंट हेरिटेज। हेरिटेज मतलब दैट लैंड, तो ये एज लैंड इज डोमिनेंट हेरिटेज एंड बीज लैंड इज सर्वियंट हेरिटेज। नॉट बी, नॉट ए, एज लैंड एंड बीज लैंड। तो ए का लैंड जो है व्हेन इट बिकम्स अ डोमिनेंट हेरिटेज, तो मैं सिर्फ ये रोड का राइट ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं अपना प्लॉट बेचती हूँ तो दिस विल गो, दिस कैन बी ट्रांसफर्ड, बट ओनली द रोड्स राइट, द राइट टू यूज दैट रोड कैनॉट बी सेपरेट फ्रॉम दैट लैंड। वो लैंड के साथ वाला राइट है। सिमिलरली पर्सनल एंजॉयमेंट, मगर मैंने मेरे फ्रेंड को बोला ओके फाइन, कम टू माय होटल सम टाइम, आई विल गिव यू अ डिनर फॉर फ्री, तो वो ऐसे बेच नहीं सकती है बाहर जाके, अरे मेरा फ्री डिनर आप ले लो, मैंने अपनी दोस्त को आउट ऑफ अफेक्शन दिया है। तो एनीथिंग गिवन टू समवन पर्सनली कैनॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। तो इफ ओनर ओनर को बोला है मैंने कि सर ठीक है आपका ही घर है, आप कभी भी आ जाना, वो किसी और को नहीं बेच सकता वो राइट, लाइक वी सॉ ऊपर री एंट्री वाला राइट। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, पहली चीज तो मेंटेनेंस ट्रांसफर करना ही एथिकली रॉन्ग है, because maintenance is given for someone to maintain themselves. They cannot go and sell it, lease it, give it away. Secondly, a future maintenance is a future property. We have already seen future property will never come into existence and future property therefore cannot be sold. तो आज वो मेंटेनेंस है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, हाउ कैन यू सेल इट? दैट इज व्हाट इज देयर। अ मियर राइट टू sue. सो आई कांट टेल कि ओके फाइन उसने मेरा घर पे आके तोड़ फोड़ किया, अब मैं उस पे उसके लिए कोर्ट में जाने वाला था, मेरी जगह आप चले जाओ, ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकती, मेरे घर को तोड़ फोड़ किया तो मुझे ही जाना पड़ेगा। दैट इज आई थिंक द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी एज वेल। who has the right, who has the right to go against me to the court? The only person who has been aggrieved. तो वो राइट मैं ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती। कोर्ट इज फॉर जस्टिस, इट इज नॉट अ commercial transaction. A public office and salary of a public officer. Why public office? Because you have been given that important position in because of your merit, your skill and your talent. It has not been given to, you can't sell it off like that कि अरे मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया, now okay fine, you go and sit on that position of a collector on my behalf. No, that's not fair. Why not the salary? सैलरी क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते हो? बिकॉज फिर करप्शन में इंडल्ज करेंगे, because it's a public office, the salary is for your sustenance. So the government officers shouldn't indulge into corruption, shouldn't indulge into immoral practices, इसीलिए उनका सैलरी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। These are the two things. Similarly, military, naval, air force, civil pensioners, political pensioners, all of these cannot be transferred. Same reason, government में तुम काम करते हो, you are not only acting there in a commercial sense, but you also have a duty for the towards the. Hello everyone, so we have come to the end of our first part of the Transfer of Property Act. I hope you all understood the basic concepts and the introduction. My aim will always be to ensure that learning is fun and that you never have to open the books again to understand these simple things and concepts revolving around law. Thank you so much for watching. Tune in for more videos coming your way.